ऐसे बैठना बोलो बैठ अभी आना है जब बैठ आया ये मेरा हक है खाना नहीं मिलेगा तेरी गांड है चंडा मारेगा ना फट के आता है दूसरा कॉल लीजिएगा ठीक है बैठ जाओ मतलब फिर भी जाना है बाहर नहीं और पीछे बैठना नहीं कैसा है मस्त है ना अच्छा आते ही शुरू हो गया तो आज बहुत ट्यूनिंग चलता है अरे आज तो अटेंड कर लिया क्या हो गया सेल्फ स्टडी You are only attending the last class. After this, you won't attend coaching. Why so? ये बताने के लिए तो attend नहीं कर रही है. Okay. Easy, easy. So today I will starting with. आगे जाओ 8 घंटा पहला में 4 घंटा होता है 2 घंटे का होगा In the last class we completed song कितना बड़ा तेरा बहुत सारे डिप्रेशन में ये था डिप्रेशन कैसे हो सकता है डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं लैम्डा वगैरह हाँ वो सब आपने अलग से पढ़ाया वो भाई 12th का फिजिक्स सर ओमकार को छोड़ दिया ऑलमोस्ट छोड़ दिया उसने क्यों वो आता नहीं कभी वो बोलता उसका मूड नहीं है सर मैंने पूछा तो बोलता है मूड नहीं उसको सच्ची बोलता सर मूड नहीं है Shall we start? Okay, calm down, everybody. Be silent. Look here. Let's start spectrum. So there are 3 topics in spectrum. One is deviation, हमने वो लेंस फॉर्मूला किया dispersion, and what else? Then spectrum, right? These are the 3 things. So there are 2 parts in this chapter. The first part has these 3 terms, and the next part has electromagnetic spectrum. Okay, that we'll see in the next class. You were saying something about the last topic. Yeah, that's formula. I think we did some numericals in the last class. ठीक है ना? वैसे ही है सारे और अगर सारे numericals नहीं किए थे, but जितने किए थे उतने काफी हैं. ठीक है? Rest you can try. अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो take a doubt solving से जो सैटरडे संडे को राइट. इधर आ जा. क्या नाम है तेरा? पाटिल. निगड़े इधर आ. ठीक है तू आ जा. तुम दोनों में से कोई एक इधर आ जा. कम हियर फटाफट आ जा. हेल्प हिम. उसको शायद रास्ता पता नहीं है. उठा के ले आज. चला इधर. जल्दी आओ. यू वेस्टिंग अदर्स टाइम. कम फास्ट.
नहीं मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जा जा जा, तो आया क्यों जा। इधर बैठ इधर। सर यहाँ पे ठीक हो ना सर? इधर बैठ। सर नहीं, यहाँ पे एसी लगा। कहाँ बैठ कर इधर आजा। सर यहाँ पे एसी है ना? एक बार मैंने बात मान जाएगा। सर इधर बैठ। चले बैठ इधर। बात मान लो। अबे जाना उधर। आजा आजा जल्दी आ जल्दी। शरीर नखरे कितने बात कर रहे हैं? कुछ है क्लास के अंदर बैठा है। 15 मिनट तो तुम लोग को खाली सेटल करने में जाता है, बताओ। Deviation is something that we've already studied. Does anyone remember what is it? B1 plus B2 I1 plus I2 minus R1. You are right mathematically, but what is deviation? Can anybody tell? देखो ये चीज अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Deviation क्या होता है? डायरेक्शन जो बदलता है। हाँ, जो कितना बदला, वही that is deviation, right? अब देखो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। हाँ, what is this medium? Glass prism है। ये क्या है? जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा, let's say यहाँ पे light is incident. Let's say this is a monochromatic ray. कौन सा रे? मोनोक्रोमैटिक। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया। अब क्या होगा? What should be the direction of refracted ray? Parallel to the base. Very good. So ये जब parallel हुआ तो क्या हुआ basically? Deviate हुआ। किससे? Original direction। Got it? So what is the angle of deviation? This is the angle of deviation, delta 1. Okay? Angle of deviation क्या हुआ? Original direction से तो ये इसने direction change किया ना? That is deviation. नहीं, एकदम पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन मिनिमम डिविएशन है तब पैरेलल हो। You're right. ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया? रैंडम डिविएशन लिया। सर मिनिमम डिविएशन में What I said, what I meant is, it will be called deviated if the ray bends towards the base, not necessarily parallel. Parallel जो है तब minimum deviation. That's a special case. ठीक है? सर जब मिनिमम डिविएशन में पैरेलल टू द बेस होता है वो बस 60 डिग्री वाले प्रिज्म होता है। Actually, for your case, yes, it is equilateral prism. हम जो case study कर रहे हैं, for equilateral. ठीक है? Rest का देखना पड़ेगा. It's experimentally इसके लिए तो verified है. Okay, so you can do the experiment and check. Right? So this is the first angle of deviation. ये क्या होगा angle of? डिफरेंस Yes. ये angle of incidence है. ये angle of रिफ्रैक्शन। refraction. अब इस point पे क्या होगा? यहाँ पे भी normal बनाओ. Now it is denser to rarer, so it will go away from the norm, right? It is away. अब ये इसका original direction था, right? So how much it is bent from this direction? It is bent this much. इसको पीछे पीछे खींच दो ना। Okay. And what is the angle of emergence? This whole angle. This is angle of. This is E. From the normal, right? Angle of emergence is from the normal. Angle of deviation is from the original direction. So this is delta 2. Am I right? Okay. Now extend it backwards. What is the total deviation then? This incident ray deviated first here and then here. 2 times. Correct? So total deviation should be delta 1 plus delta 2. Right? Can we say it is true? Let's check. So for that I will extend it backwards. Okay. Now see this line and this line. So this must be vertically opposite angle. So this should be equal. Okay. Now let's check this angle. What is this angle? Let's call this as delta. So if you consider this triangle,
Okay, let's say this is PQRS. Let's call this as T. So in triangle QTR, right? What is the exterior angle? Delta. Delta must be equal to sum of interior opposite angles. Okay. So this is the emergent ray. This is the incidence ray. So this is the original direction, incident, and this is the emergent. So total deviation is delta. And it is equal to sum of deviations at the first surface A, B, and second surface AC. Is it clear? So therefore we are getting, therefore, or where is total deviation. Delta 1 is deviation at surface AB. Delta 2 is at surface AC. ठीक है, ये तो हो गया deviation in the case of monochromatic. What is monochromatic ray? Single color. ठीक है. So when we repeat this experiment with different colors, when we repeat this experiment with different colors, then what do we find? It is found that deviation for violet color The maximum. is maximum. It is greater than deviation for red color in that order. So if you go from in this order, the deviation is maximum for violet color, it is minimum for red color, and it decreases for other colors. Okay. So what does this deviation depend on? Wavelength. So what do we get? So deviation is maximum for violet means what? What about the speed of red color? Red color maximum. Speed will be least. Only then it will get a time to deviate. Least of violet. Yes. So the speed of violet color will be less than speed of red color. क्योंकि deviation किसका ज्यादा हो रहा है? Violet का. इसकी speed क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. That means the refractive index of the prism is more for violet color and less for red color. Okay? So क्या relation बना? क्या relation बना wavelength में? Therefore, अच्छा इसका wavelength किसका ज्यादा है? Sir, violet. Wavelength of red is more. Wavelength of violet is least. ठीक है? Wavelength किसका maximum है? Sir, इसका maximum है red का. इसका least. Minimum. Max and minimum. उल्टा relation. समझ आया? तो अब refractive index से क्या relation बनेगा अपना? Refractive index is inversely proportional to wavelength. जिसका wavelength ज्यादा है उसकी deviation कम है, मतलब उसका refractive index कम है. ये समझ आ गया? और ये देखो, refractive index is inversely proportional to wavelength. क्या होता है refractive index? कौन बताएगा? सामने कौन सा? रुक जाओ ना, रुक जाओ. तुमको मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है? तुम हाथ खड़ा करना तो. Anybody? Refractive index क्या होता है बेटा?
यहाँ क्या करने आप लोग? सोचो, किसी को याद है पीछे से? ट्राई तो करो यार। हेलो लास्ट बेंच, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अभी तो एग्जाम दिया होगा उसका, टेस्ट लिखा कि नहीं? टेस्ट ही नहीं लिखा, सीधे फाइनल एग्जाम। चलो बताओ। तुम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हो, जैसे डेविएशन पूछा तो बोलते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ट्रू है, लेकिन मतलब क्या है उसका? कौन सा ज्यादा बेंड होता है? जो रे ज्यादा बेंड होगी, जो कलर ज्यादा बेंड हो रहा है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। समझा? अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कब मिलेगा? ये हमेशा क्या होता है, C बाई V होता है ना, या V1 बाई V2 होता है, स्पीड ऑफ लाइट V1 बाई V2 होता है, यही होता है ना? ठीक है, तो डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड्स। तो जब ये कम होगा डिनोमिनेटर, तब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ठीक है, वॉयलेट में क्या होता है? ये वॉयलेट में क्या होता है? मिनिमम होता है, लीस्ट होता है ना, स्पीड मिनिमम होती है वॉयलेट कलर में, और स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। कैसे पता चला हमको? डेविएशन से। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको जो वॉयलेट कलर है सबसे नीचे मिलता है, उसका डेविएशन ज्यादा आता है, यानी इसकी स्पीड क्या होती है? सबसे कम है, अभी तो बेंड करने का चांस मिला ना। रेड वाला इतना फास्ट होता है, बेंड होता ही नहीं। ठीक है, तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो वेवलेंथ का और स्पीड का सिमिलर रेशियो है। देखो, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए हमने क्या लिखा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। वेवलेंथ किसका कम है? वॉयलेट का कम है। बहुत सिंपल है, मतलब लॉजिकली सोचो, ये सब लॉजिकल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो तुमको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं, ऐसे रिलेशन पे, ग्रेटर देन, लेस देन, ये समझना जरूरी है, तो ही तुम न्यूमेरिकल कर पाओ। समझ आ गया डेविएशन का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है? ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कलर, कलर कौन डिफाइन करता है? वेवलेंथ करता है। ठीक है, तो ये कलर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। ठीक है, ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्क्रिप्शन ऑन डेविएशन ऑफ लाइट, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन फिजिकल वेवलेंथ, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल, और किस पे करता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर पे करता है। वेरी गुड, वेवलेंथ। और ये हो गया वेवलेंथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम खाली वेवलेंथ का डिपेंडेंसी देख रहे हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इन दिस चैप्टर ओनली द कलर ऑफ रे। क्लियर? देखो तुम्हारे यूट्यूब वॉल्यूम में दिया होगा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, अगर ये इसको जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसका डेंसिटी कम हो जाएगा ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। As temperature rises, the refractive index will decrease, है ना? क्योंकि ये डेंस, अभी डेंस है, कूल है, तो टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा? रेयर होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी डेविएशन एबिलिटी कम होती जाएगी। लॉजिकल, ठीक है ना? डेंसिटी से रिलेटेड है, और मटेरियल तो डेंसिटी हो गया, डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, खाली ये कलर वाला थोड़ा उल्टा है। कलर वाला कैसे करोगे? स्पीड से करोगे, तो स्पीड और वेवलेंथ का सेम रिलेशन। ठीक है, चलो, गुड टिल हियर। नाउ विल स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
What is dispersion? To study dispersion, we'll replace monochromatic ray with white light. Okay, so now let's see what happens. So I'm erasing this diagram. Let's study dispersion. So dispersion में what we have done, same concept for white light now. Diagram दिख रहा है? So you mark a normal over here. You draw a normal over here. Now white light is incident at this point. This is white light. Now what we observe is when we keep a screen over here. When we keep a screen on this side, what do we observe? We observe that this light ray gives a band of colors like this. So right on top, violet at bottom. This is what we get. Okay. So we get a band of colors. So this is the order of color. With your violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So here what we have done, what we did individually for deviation, right? Whenever we pass a white light, when the white light comes out from the other end of the prism, it is separated in various bands of color, 7 bands of colors. Okay, so this band of color is called spectrum of white light. What is it? What is it called? Spectrum of white light. So these colors are arranged in some specific order of their decreasing wavelength. If you go from top to bottom, it is decreasing. If you go from bottom to top, it is increasing. Okay. So this ordered arrangement of the colors of light in increasing or decreasing order of wavelength is called spectrum of white light. Got it? Now, why did we get the spectrum? So inside the prism, what is happening? There is a splitting of these colors taking place. Right? This splitting of color is called dispersion. Right? So splitting of white light, right? When it passes through glass prism. Okay, this is called dispersion. What causes dispersion? The difference in speed, the wave speed. Yes, the deviation is different for different color of light, or the refractive index of the material is different for different color of light. So each color is bending differently. Therefore, they will get split. So did the prism add the colors? No. White light itself has those component colors, right? Is this clear? So what is dispersion? Splitting of white light when it passes through the glass prism due to difference in speeds of different colors. Different colored rays through prism. So if the speed is different, then the refractive index will be different. Okay. So you might ask why we have not shown other lines.
You can show, but it is not required. Just show the red and violet and all other colors in it, right? Because then it becomes very busy. Or else you can draw more lines. Okay, so like this. It's not required, but if you want, you can draw these 7 lines. But they should all be clear. It should not be like the splitting will take place right at this space, AB. I was. Okay. So the splitting, all these lines should be different, but यहाँ पे एक point ही नहीं दिया. Clear? So this is it in this chapter. Do you have anything left in this chapter? हाँ वो तो है second part, वो मैं start कर देता हूँ. Numerical. इसमें न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, बहुत कम है, प्लस इसमें बहुत रिड्यूस सिलेबस है. हाँ इसमें कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है. न्यूमेरिकल के नाम पे 2 न्यूमेरिकल ऐसे. You want me to do it? हाँ. ठीक है चलो. So this is part A. We are through with part A. So what is spectrum of light? The band of, so ये सारा definition ना ये blue boxes में दिया हुआ है, right? ये जो spectrum है, तो यहाँ पे मैंने बोला spectrum है. The band of colors seen on passing white light through a prism is called spectrum. Like it is the ordered arrangement. Okay. फिर dispersion के लिए phenomenon of splitting of white light by a prism into its constituent colors is known as dispersion. So constituent colors का मतलब क्या हुआ? The white light consists of what is going on? I told you, father, you are a very nice, disciplined guy. What are you doing now? I can see your hand where it is going. इसलिए मैंने बोला अलग-अलग बैठ जाओ. साथ में बैठेंगे तो वो नहीं करते. Okay, any questions, anybody? Sure. Okay, so let's do the numericals. बिठा रहा हूँ उसको, ठीक है? Yes. You missed quite a lot of concept of sound chapter. I don't know. You missed on resonance, force, vibration, right? So that is a good topic. And I don't know your concepts are clear about that. Clear? Okay. Video देख लेना अगर lecture का है. So tell me, is resonance a force vibration? Yes. Special case of force vibration. Yeah, it is a special case of force vibration. What is the special case? When the frequency of the external force is exact to the natural frequency of the operating body. And what is natural frequency? Natural frequency is natural frequency. Right. So any body which is capable of vibrating. Natural frequency is the frequency at which the body vibrates without any. The external force एक बार मतलब not periodic external force. You need external force to set the vibrations once, right? But that external force may not be periodic. So I think you know it. Okay, natural frequency. So numerical 1. Read the numerical. Read numerical. Calculate the frequency of cable able to
To calculate the frequency of yellow light, right? Wavelength given is 550 nanometers. Speed of light is given as 3 into 10 raised to 8 meter per second. So what is the relation? C is equal to F lambda. Therefore, F is equal to C by lambda, right? So what is nanometer? 10 raised to minus 9. Minus 9 meter. Nano is ये कैसे पता? बेटा छठवीं सातवीं से पढ़ रहा हूँ. डेका, हेक्टो, नैनो पढ़ाई की नहीं, याद रखना होता है. तो ये ऐसे पता होगा. एंगस्ट्रॉम अभी पढ़ाया है मैंने. एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 raised to minus 10. मिली सेंटी डेसी जब पढ़ा था ना, तभी नैनो भी पढ़ा था. फेम्टो भी पढ़ा होगा. अरे यार, और फिर से पढ़. 10 raised to minus. क्या होगा ये? कर लो इसको जो होगा. So this is 3 into 10 raised to 17, right? Divided by 5. चलो कितना होगा इसे? एक जीरो कट कर दो. हाँ, तो ये हो जाएगा फिर 16. 16 हो गया. तो ये हो गया 21. और इसको हम कर लेते हैं 300 डिवाइड बाय 55 into 10 raised to 14. अब देखो कितना होगा. डिवाइड 5 से करो इसको. 11 60 by 11 कितना होता है? 5 point something. 60 by 11 10 raised to 14. बताओ. 5 point into 10 raised to 14. इतना हर्ट्ज है क्या आंसर? ठीक है. तो स्मार्ट कैलकुलेशन करो. ये न्यूमरेटर को बड़ा बनाओ, कर डालो. ठीक है. तो इतना डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा, इसलिए जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुमको फायदा होगा. सेकंड वाला करो. The frequency range of visible light is from 3.75 to this. Calculate its wavelength range. ठीक है, wavelength निकालना है इसमें. पहले वाले में f निकाला है, अभी wavelength निकालना है. C सब में कॉमन ही है. दो केसेस है. ठीक है. तो पहला फ्रीक्वेंसी क्या दिया है बताओ? 3.75 3.75 into 10 raised to 4. ये हो गया. F2 कितना है? 7.5. 7.5 10 raised to 14 ना. हाँ. ठीक है. अब इसके लिए तुमको निकालना है वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2. C सेम है दोनों के लिए. 3 into 10 raised to 8. ठीक है ना. C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर. एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट इज सेम. 3 into 10 raised to 8. लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 is equal to C by F1. ठीक है. 3 into 10 raised to 8 divided by 2. चलो सॉल्व करो इसको. ये कितना हो गया? 3 into 10 raised to 8 नहीं सर, इसको 10 raised to minus 14. ठीक है. उसको 10 कर लो. ये दोनों डेसिमल ऊपर. ये हो गया 375. इसको रहने दे ऐसे. अभी इसमें हम क्या कर लेंगे? इसमें 3 जीरो ले लेंगे. 10 raised to 7 into 10 raised to 10 raised to minus. 1. ठीक है. 375 कर दे डिवाइड 25 से. 25 से डिवाइड करो कितना होगा? 25 1 जा 25. अब क्या बच गया यहाँ पे? 25 से होगा ये. 25 8 times 200 होता है.
125 हो गया ना, ये कितना हुआ? अरे करो यार इसको 25। एक मिनट, इसको 5 से करते हैं। 5 7 क्या 35, ठीक है। 5 5 6 क्या, ये ले हो गया। 25 3 जा 75, 25 2 50, 24/3 8 हो गया। 8 so 8 into -7 ये है क्या? वेवलेंथ रेंज में एक वेवलेंथ ऐसी है क्या? तो यूनिट क्या है इसका? हाँ, तो एंगस्ट्रॉम में निकालना एंगस्ट्रॉम में तो 8000 आ गया है क्या? 8000 एंगस्ट्रॉम एक है। 8000 into 10 is to minus 8000 into 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये वाला एक आ गया, ये वाला, तो अगला वाला निकालो। तो इसको एंगस्ट्रॉम में निकालो। यार पे नहीं यार, एंगस्ट्रॉम में निकालो। एंगस्ट्रॉम में क्या 10⁻⁻10 को ए लिख देना, हो गया एंगस्ट्रॉम 8000। नहीं, हाँ, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है भाई? व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। अच्छा, तो सिर्फ उसको 8000 एंगस्ट्रॉम लिख लो, निकालने के लिए। You have to be aware about the conversion, तो फिर लिखो, ठीक है। दूसरा तो ये देखो, ये घबराते क्या है, यहाँ पे घबराते हो, कैलकुलेटर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? इसको बड़ा, न्यूमरेटर को बड़ा कर दो डिनोमिनेटर से, रैशनलाइज, ठीक है ना भाई? yes, गुस्सा है सर आज का सर बेचारे की बहुत क्या बोल रहा है? अभी फिर से मिलना है संडे को। इस बार मेरा वर्जन चेंज हो जाएगा करवा, बहुत बोल रहा है। सबको ये कैलकुलेशन समझा कैसे किया है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला λ2 निकालते हैं अभी। ये मिटा दो। सर एक सेकंड सर, देखो λ2 कैसे निकालेंगे अपन? फिर से वही c/f2 ले लेंगे। c कितना है? 3 into 10⁻8 डिवाइड बाय f2 कितना है? 7.5 into 10⁻⁻14 10⁻14, यही है ना? हाँ सर, तो ये तो काफी सिंपल है। हिंदी को कर दो। ये कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा 1/0.3 25, 0.25 ठीक है। ये हो गया, तो ये 100 में मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। क्या ठीक है? 2.5 कुछ भी 0.25 2.5, ओके, इनटू 10⁻⁻8 -6 - 14 कितना हो गया ये? माइनस 10/25 10⁻⁻6, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे हाउ मच? 0.4 into 10⁻⁻6। नहीं सर, उसको वो कर दो ना, उसको एक और जीरो ऐड कर दो, फिर 4 से कर दो सर। 10⁻100 into 10/25 कितना हुआ? 0.4 हुआ ना? हाँ, कितना हुआ? इसमें 10/10 करेंगे तो 100/25 into 10 हो गया, तो 4/10 मतलब 0.4, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको एंगस्ट्रॉम में ले आना है। सो इट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10,000, तो ये क्या होगा? 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 4,000, और ये कितना हो गया? -10, 4,000 एक्स्ट्रा। ये है क्या 4,000 एक्स्ट्रा?
ठीक है, मतलब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पीछे बुल्ली कर देता हूँ। सर हाँ बोलो। काका सर क्या स्टाइल दे रहे हो बहुत एग्जाम्पल ये इतना बड़ा भगवान के सामने मेरे मनोज से भी पूछता हूँ, मनोज से मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार। पावर का क्या होगा, जो सर्च और डायरेक्शन तक ये समझ आता है, क्या बताऊँ ये मैं यहाँ पे into 10,000 वर्ड 10,000 कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये जो डिवाइड बाय 10,000 है, ये क्या हो गया, दैट इज ये 10⁴ हो गया और ये 10⁴ ये वेरी गुड आपको किया और है वो एक मिनट यार, उसने कुछ पूछा है। 0.4 into 10,000 करेगा तो क्या होगा, 4,000 आएगा। तो 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 10⁻⁴ करके देखो ना, जब हम बोल रहे हैं 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और किसी को नहीं समझा ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, नहीं समझा, समझा ना, 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट। ओके, सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये तुम लोगों ने मुझे पढ़ाने नहीं दिया था चैप्टर, याद है। साउंड बोला था पहले, पढ़ो। साउंड समझने के लिए पहले ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो कभी कभी करता है। आज तो बहुत शांत है, क्या बात है, तब ठीक है तेरे साथ। कभी कभी कुछ बच्चे ज्यादा शांत हो जाते हैं, मैं डर जाता हूँ कि इसके साथ सब ठीक तो है। ये तो इसके साथ स्कूल जाना ही छोड़ दिया, मतलब इतना खराब कंडीशन है कि बता भी नहीं सकता। हाँ ये यार, मुझे ऐसा बोलना तो ठीक है, बट तुम लोग बच्चों यार इन सब चीजों से। ये स्कूल वाले ना अपना आधा काम तो बच्चों से करते हैं, राइट। वो किस नाम पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे ये सब तुमको इन्वॉल्व है सर, खुद अपना काम तुम्हारे सर। सर मेरी बहन बनी थी ना, उनको ना ग्राउंड से पत्थर उठाने के लिए So there is a difference between community service. Community service करो, तो उनको भी ढंग का इंसान तो बनना है। हाँ, फालतू की एक्टिविटी से हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और वो इन्हीं सब चीजों में उलझा के तुमको पढ़ाई लेना शुरू, सही बात, ठीक है। So you look at your interest also. कम से कम ठीक है।
चलो, let us understand today what is electromagnetic spectrum. ठीक है? Let's understand what is electromagnetic spectrum. White light में क्या होता है? White light का spectrum हमने सीखा, right? क्या होता है white light spectrum? 7 कलर होते हैं. Very good. कौन कौन से? ओके, ये 7 कलर होते हैं. ये क्या है? इसको हम कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम. तो सन से जो लाइट आती है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इतनी ही फ्रीक्वेंसीज है, इतनी ही वेवलेंथ है, ऐसा नहीं है. ठीक है, इसको अगर हम एनालाइज करें some special detectors in laboratory, then we find कि कुछ और फ्रीक्वेंसीज है या कुछ और वेवलेंथ्स है जो हमको दिखाई नहीं देती. Beyond red color also there are some rays, right? And beyond violet color also we have some rays, which is not visible or which cannot be detected by our eyes. ठीक है, तो रेड कलर के आगे जो रे है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड. ठीक है, उसके आगे क्या है? माइक्रोवेव. माइक्रोवेव ये सब सनलाइट का ही पार्ट है. माइक्रोवेव और क्या है? रेडियो वेव. रेडियो वेव. ओके, ठीक है, तो ये सारे भी सनलाइट के अंदर होते हैं बट वो हमको दिखाई नहीं देते, और ये बहुत कम प्रोपोर्शन में होता है जो सनलाइट के अंदर. आर यू लिसनिंग? ये देखो, इनकी कुछ अलग ही कहानी चल. सनलाइट के अंदर की जो ये रेज होती है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल स्पेक्ट्रम. व्हाइट लाइट के एक्सपेरिमेंट के टाइम ये भी होता है. ये होता है लेकिन ये दिखता नहीं है, वो प्रिज्म में दिखाई नहीं देगा, ग्लास प्रिज्म में. ठीक है, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है बहुत ही कम होती है. ठीक है, एंड दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली आल्सो. जैसे तुम्हारा टीवी का रिमोट कंट्रोल है, इसके अंदर क्या होता है? सो दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड. माइक्रोवेव ओवन होता है घर में, उसमें ये वेव्स हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करते हैं. ये भी प्रोड्यूस होता है. जो टीवी के जो सिग्नल्स हैं या जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं, ठीक है, या जो एफएम चैनल है वो किस पे चल रहा है? रेडियो वेव्स. अंडरस्टूड? So this can be produced in laboratory. So can this be white light, artificial white light. ठीक है? So all this spectrum is part of sun ray. So this is only the visible part. Beyond violet we have other rays, which is ultra UV rays, ultraviolet. ये visible है? नहीं है. ठीक है? So it is called ultraviolet. उसके आगे क्या है? X-rays. ये भी विजिबल नहीं है. उसके बाद क्या है? गामा रेज. ठीक है, तो अब देखो ये भी इनविजिबल है. इनविजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, so this full arrangement of rays found in sunlight is called electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लाइट रे है ना, लाइट रे या जो भी एटलीस्ट ये तो हमको दिखता है, ये लाइट रे कैसे आती है? इस फॉर्म में आती है. तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो ये वाला पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है. और जो ये है ये डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में लाइट रे चल रही है. अभी सामने था, ये मैंने बताया था. वो है नहीं तुमको, लेकिन मैंने बताया. तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर एंड दे आर ट्रैवलिंग आल्सो परपेंडिकुलर.
So they are like orthogonal. ऐसे अगर लाइट तुम्हारी तरफ आ रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है इस प्लेन में, और ये तुम्हारी तरफ आ रही है। तो जो तुमको विजुअल सेंसेशन मिलता है वो किसके वजह से मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। That's why it is called electromagnetic ray. सब ऐसे ही है, लेकिन ये वाला दिखता है और ये नहीं दिखता है। समझ आ गया? So this is called electromagnetic spectrum and it is transverse in nature. क्या था transverse? When the vibration is perpendicular to the propagation. यहाँ पे perpendicular था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, और प्रोपेगेशन ऐसे। ठीक है, समझ आ गया? तो स्पेक्ट्रम क्या होगा? यही स्पेक्ट्रम जब हम एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं ना सबको, ठीक है, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ये बताओ, वेवलेंथ लेफ्ट से जब राइट जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, when you go from left to right, so सबसे कम वेवलेंथ किसका है? गामा का। सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? रेडियो का। समझ आ गया? अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होता है। ठीक है, सो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा की। किस रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक, राइट? एनर्जी ई मैक्सिमम, इसकी क्या है? एनर्जी ई। इसलिए ये साइड सब सेफ है। हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन किसमें होता है? माइक्रोवेव रेडिएशन। जो हम रेडियो सुनते हैं, दिन भर सुनेंगे तो भी हमारा किसमें हो रहा है? रेडियो। तो दिस इज सेफ, राइट? सनलाइट में भी अगर हमारा ओवर एक्सपोजर हो गया तो दैट कैन बी लीथल। चक्कर आगे गिर सकते हो, खत्म हो सकते हो। ठीक है, अनलेस यू आर हैबिचुएटेड इन लिविंग इन डेजर्ट्स, वो भी प्रोटेक्ट करके रहे। तो यहां से आगे जाओगे तो ओवर एक्सपोजर कैन बी नॉट वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, लिमिटेड एक्सपोजर में कुछ नहीं होगा, बॉडी विल रिकवर। बट इफ यू आर ओवर एक्सपोज, ये सारा हाई एनर्जी रेडिएशन है, यहाँ तक तो टॉलरेबल है, बट इसके आगे टॉलरेबल नहीं है। तो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर ही टॉलरेबल है। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया? ऑलराइट, सो दैट्स इट। और जो वैल्यूज है वो तुमको सिर्फ इसका ही याद रखना है। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना है? 8000। रेड का 8000 है। बस इसका याद रखो। इस साइड क्या होगा? ग्रेटर देन 8000 होगा। ठीक है, इस साइड क्या होगा? लेस देन 4000। ये याद हो गया? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा तुमको याद है? सी तुम्हें पता है 3 × 10⁸। लैम्डा सब्स्टिट्यूट करो, फ्रीक्वेंसी। तो कल ये रेंज याद रखो, बाकी इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया है बुक में, यू कैन तुम्हारे वॉल्यूम में दिया है, देखो यहाँ पे भी ये टेबल दिया हुआ है, इसमें वेवलेंथ दिया है। जस्ट रीड दिस टेबल। हाँ, ये तूने कौन सा लिया? कौन सा था वो? पेज नंबर बता। 134 मेरा बुक नंबर। हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों दिया हुआ। ठीक है, तो एक बार देख लेना। बट इफ यू रिमेम्बर दिस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो तुम लॉजिकली पता कर सकते हो। कभी कभी कोई रे का नाम देगा तो तुमको बोलेगा इसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, या कभी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ देगा तुमको आइडेंटिफाई करके बोलेगा कि कौन से टाइप का रे है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है। ठीक है, तो तुम ऐसे ही लॉजिकली उसको फिल्टर करो। अगर लेस देन 4000 है तो अल्ट्रा, एक्सरे, गामा में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलो रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सर मेरा ये छोड़
ऐसा मस्ती मत करो एग्जाम टाइम में, ठीक है? चलो क्या बोला बे? अबे मेरे नोटबुक दे बे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं बात कर सकती हूँ, एक तो तेरा कुछ ना एक घंटा नहीं लगेगा। ये खुद का रेडी करने के बाद तो मैं सोचता है क्या होगा। क्या? तन्मय की चिल्ला मत।